Hey guys, this video has been recorded and to some extent even edited using this iPhone 11. So remember to check out the bottom left corner to find out which lens I used or which microphone I used. Hey guys, welcome to the first 4K vlog shot with this iPhone 11. तो आज का plan ये है that I am going to the USCIS fingerprinting center because I am applying for UK visa, so I'll get my fingerprints, biometrics done, and then I'll send my application to UK. So let's go. So everything is going on time so far, so I'm going to my station and then take a bus. So overall मुझे लगेंगे 40 minutes to go to that fingerprinting center. So I checked that my bus is going to start from the station where I'm going in 5 minutes. But if I do not reach there in 5 minutes, then I'll have to wait for 30 minutes for my next bus. So that's a long time. So I hope I reach the station on time. Now time to run. That's my bus. So I made it, but there's one problem that I forgot my water bottle. तो मुझे वहाँ पे जाके खरीदनी पड़ेगी. Now here I'm testing the microphone in a pretty noisy bus. From here it will take me around 6 minutes to reach the biometrics place. आज vlogging के चक्कर में I almost missed my bus stop as well. If I would have missed this bus stop, it would have taken like 20 minutes to walk from the next bus stop. So I feel lucky. Never mind, I actually have missed my station. So I put the wrong address. मैंने डालना था 3358B Chamri Tucker Road, but I entered 338B Chamri Tucker Road. So one digit was less. Because of that, I got up on the wrong bus stop. अब मुझे 25 minutes walk करके वहाँ जाना पड़ेगा. Unless I find a bus on the way. I found a bus stop behind me, but the problem is bus is gonna come in 20 minutes. तो मैं walk करके पहले पहुँच जाऊँगा. So I'll just run and reach there. Just got done with my biometrics appointment, so as always it was very smooth. But the difference is, जब मैं Canada के लिए आया था, when I came for Canada, I came during the lunch time, so there was no line at all. I was the first one to get it done. But this time I came before lunch time, तो बहुत ज़्यादा लंबी लाइन थी. लाइन मेरे आने वक्त बहुत लंबी थी और मेरे जाने वक्त थी ही नहीं. और जब मैं Canada के लिए आया था, मेरे आने वक्त नहीं थी, मेरे जाने के बाद बहुत लंबी थी. It was opposite, but it's a fun experience. Changes are important. Now my plan from here is to go to library, pack my passport and everything and send it to UK Embassy in New York. I want to get done with everything today. So मैं जैसे आया था वैसे ही जा रहा हूँ, सेम बस राइड एंड देन ट्रेन राइड. और मैं आपको बताना चाहता हूँ, इट कॉस्ट $2.5 वन वे एंड $5 राउंड ट्रिप. सो होता ये है कि दे कंसिडर योर ट्रांजिट ट्रिप. इफ़ यू बाय द ट्रेन ट्रिप देन $2.5 इज ऑटोमेटिकली कंसिडर फॉर योर बस ट्रिप, तो वो बच जाते हैं. सो विद इन 2 आवर्स, अगर आपने जैसे कि आज अगर ट्रेन ट्रिप खरीदी तो आप 2 आवर्स में कोई भी 2 बसेस चेंज कर सकते हो. सिमिलरली इफ़ यू बॉट अ बस ट्रिप राइट नाउ, यू कैन चेंज 2 trains, actually 1 train after that. So it's like it's pretty convenient. With $5 I was able to do 1 hour long trip, so it is pretty cheap. But the reality is that the bus was pretty late, so I almost booked an Uber और मैं last minute cancel की.
And I think I just missed the train. कितना adventure हो रहा है. पहले bus stop miss किया, फिर I missed my first bus after that appointment, and now I miss my train as well. It's been 2.5 hours that I started. Now I'm very, very hungry. I hope to find free food once I go back to library. It was a super long journey. My plan was to go to the library, but instead I'll be going to the computer science department because the printer over there is for absolutely free. So I'll print my necessary documents, pack it up for UK Embassy and then ship it. अभी मैं यहाँ पे प्रिंट करने आया था तो आई मेट कुशाग्र एंड नमन हियर. दैट वाज जस्ट अ कोइंसिडेंस. मैंने कुशाग्र को टेक्स्ट ही किया और वो हाजिर हो गया. हाजिर नहीं, हम सुबह से यहाँ पे हैं. तो यहाँ चलें क्या? फकिंग एक्सप्रेस. He meant forking. जिसे fork pronounce करते हैं. That's how you pronounce it. It's pronounced fa. Yeah. चलें क्या? कुशाग्र ने अभी टिकट कराया. बताओ कितना कराया इंडिया का? अभी कराऊंगा यार. कितने करा? ऑलमोस्ट करा दिया है. बस पे करने की बात है. 1600 या 1700 डॉलर लगेंगे यार. लेकिन बताओ फ्लाइट कहाँ से होके हैं? कहाँ से? यहाँ से इटली जाएगी. इटली के बाद है ना वहाँ पे जाएगी दुबई. वहाँ पे ले ओवर फिर इंडिया. उसके बाद है ना इंडिया से वापस आते हुए कभी थी शायद लंदन में थी, राइट है ना? लंदन जाके फिर वहाँ पे रुक के यहाँ पे तीन जगह पे घूमने का. तो सबका वीजा लगा घूम के आओगे? नहीं, पागल हो गया. पर हाँ लेओवर टाइम इतना है कि हाँ घूम सकते हैं. एक चीज़, जब इटली जाओगे ना, मामा मियाँ जरूर कहना. हाउसफुल का डायलॉग, मामा मियाँ. मतलब पता है सबका? नहीं, चेक करना, मुझे खुद नहीं पता. पास्ता. हाँ, मामा मियाँ का मतलब दिखाना. मामा मियाँ पे रेस्टोरेंट है ना अपना. आपको देखो मामा मियाँ मीनिंग पता नहीं है क्या मीनिंग है. Who denoting various kinds of emotions. अरे नहीं, अच्छा, अर्बन डिक्शनरी. हाउसफुल इतनी बार देखी है फिर भी मतलब नहीं पता. आज माइंड में आया इटली से. दोनों है. क्या बात. ओ मैं ऑलरेडी मेरी क्लासेस है. ओके, सो डन विद प्रिंटिंग. नाउ आई एम गोइंग टू द USPS स्टोर टू शिप माय डॉक्यूमेंट्स टू UK. So I just shipped my documents. So Naman found my documents. shipped. Shipped. और Naman found a place where we can get free food through Ritual app. तो वहाँ पे जाएंगे. You can use our referral code. It's in the description below, and we can get. देना. हाँ ज़रूर. तो using that referral code, you can get free food for a couple of days. Like कभी ऑफर आती है तो वो मिल जाता है. So it's just for $1, and we're gonna go there. खाना वेजिटेरियन ज़्यादा अच्छा लग रहा है नॉन वेज से. फोटो मस्त आई है देखो. हाँ, अच्छी आई. आज धोखा नमन और मेरे दोनों के साथ हो गया. दोनों ने कहा था कि बाउल में देना यहाँ पे, पर उन्होंने पैक करके दिया. हमने बाउल में खुद डाला तो थोड़ा ठंडा हो चुका है. ठंडा हो चुका है. ठंडा मैं गंदा क्या हो गया? वो कहते हैं ना पंजाब च कि मैं फाइल लाती है UK दी. हुन वीज़ा लगेगा कि नहीं वो देखी जाएगी और रब दे हाथ है. बाकी आई गिव माई 100%. आई होपफुली विल गेट द UK वीज़ा सून. And now I would like to share that I did not use any gimbal or any technology to make the video look more stable. It was right through my hand movements or through this vlogging setup. So I'm using Rode Video Micro Plus. In some cases I didn't even use this microphone. I was using the inbuilt audio, which is, I think, again, it is very, very good. So this microphone costs around $300. I had to purchase this cable because the cable that comes right out of the box of this microphone doesn't work with the smartphone. I will link everything in the description below, including this, like the vlogging setup. So this is by Boya, so it costs only $25. But if you buy this setup with the microphone, then microphone plus the setup will cost you only $55. So you can definitely check that out. And that's pretty much it. All you need is this Boya system plus this microphone, or you can just buy the Boya microphone. That's how I started. And you can even buy the Joby tripod. I'm currently using that $50 tripod, but I started with a 500 rupee tripod, so you can check out that as well. So I'll link everything in the description below. So basically the conclusion is, if you want to start as a vlogger right now with just your phone without any tripod, you can become a vlogger. So that's pretty much it. Thank you so much for watching, and I will see you guys in the next one. Goodbye.